जी सर। सर जुबैर, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी, गिव मी अ मिनट। इंट्रो स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? No, sir. Yes. लेट मी स्टार्ट। iCode गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो इंडस्ट्री के दरमियान और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सकें। हम जो टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए वो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना और ताकि जो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं उनको जॉब्स मिल सकें, ना सिर्फ जॉब्स मिल सकें बल्कि हाईटेक जॉब्स मिल सकें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉयबल हो सकें। और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए चाहिए हाई लेवल स्किल्स। तो हाई लेवल स्किल्स के अंदर आ जाते हैं लीड कोड एक्सेट्रा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सब कुछ हम iCode गुरु के ऊपर सिखाते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मीटअप करवाते हैं, स्टूडेंट्स को हैकाथॉन्स के अंदर भेजते हैं और उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ सके। हम किस तरह से काम करते हैं, हमारा ये फोकस होता है कि 6 सेक्शंस पर डे हो जिसके अंदर एक वीकली वेबिनार हो, एक वर्कशॉप हो। इस टाइम आप वीकली वेबिनार जो है वो अटेंड करें। इसके अलावा लीड कोड का सेशन होता है जिसके अंदर बहुत डिटेल से प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जाती है। क्योंकि ये कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो इसके अंदर क्योंकि ये कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है सो इस वजह से इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो ट्रेनर होता है वो उनको गाइड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को और किस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उसको जॉब लेवल के ऊपर समझ सकें। उसके अलावा फ्री आइल्स एंड जीआरई कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आइल्स की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। उसके अलावा पाइथन के फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स क्लासेस होती हैं और मशीन लर्निंग के सेशंस होते हैं। फिर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का सेशन होता है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी हमारा सेशन मिस कर जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मिल सकती है। रिसेंट अचीवमेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं तो 200 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशंस। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अंदर पोजीशंस हासिल किए हैं। आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। उसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस करवाए हैं हमने इंक्लूडिंग यूएसए के अंदर। स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान से iCode गुरु के थ्रू यूएस के अंदर अपना एडमिशन स्कोर किया है। उसके अलावा लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब iCode गुरु गाइड करता है और स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप iCode गुरु के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है उसके स्लैक चैनल के ऊपर तो www.icode.guru के ऊपर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं, दैट इज www.facebook.com/iCodeGuru। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 6G नेटवर्क्स, मिथ्स एंड रियलिटी। और जो हमारे स्पीकर हैं वो डॉक्टर माजिद भट्ट हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। Dr. Majid Bhatt received PhD and master's degree in telecommunication from Norwegian University of Science and Technology, Norway. He is a senior research specialist 5G plus at Nokia Bell Labs, France. Dr. Majid's major area of research interests include communication techniques for wireless networks, focusing mainly on radio resource allocation, scheduling algorithm, cooperative communication, energy harvesting, green communication, and machine learning for wireless networks. He is also a senior member of IEEE. Ji sir, over to you. Thank you. So let me share my screen. So can you hear me first? Yes, sir, we can hear you. Okay. So now you can see my slides. Can you please confirm that you can see my slides? Yes, sir, it's visible.
Yeah. Okay. Thank you. Okay. So I'll start with a little bit introduction of what we have in artificial intelligence for 16 networks. So मैं इसकी ज़्यादा details में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे idea है कि most of the students जो हैं वो computer science background से हैं. So I'll keep it at very high level. It will be more interactive discussion. So अगर आपको कोई भी चीज कहीं भी question करना हो तो please feel free. So it's not really a seminar. I will take it more like interactive session. So this is how I would like to conduct this session. And then in the end, I'll spend like maybe 10 to 15 minutes on some general motivation for the students who are at your age and trying to secure admissions or making careers outside. So it will be like a very interactive session. So I don't really want to focus much on technical things. It's very short period for focusing on technical stuff, and you need some background, which I know most of you guys don't have it. Okay, so I don't know what's this thing going on. Gibran is doing. Okay, so please don't do it if you're doing it. Okay. So let me start with brief introductions. I'll not go in the details of this slides. It's just that what currently I'm doing, as already told, that I'm a senior research specialist at Nokia Bell Labs in US. And besides that, I have an adjunct research professor position at Trinity College Dublin in Ireland. And I'm IEEE ComSoc distinguished lecturer for the class 2022-23. So sometimes I have to give lectures as a part of this IEEE ComSoc distinguished lecture program. So that was something about me, and let's just start with something where I work. So I'm part of Nokia Bell Labs, as I said. And Nokia Bell Lab has a history of innovation for the last 90 years. And it's not only in communication or in wireless communication. So as I'll show on the next slide, we have been doing research in all domains of electrical engineering and computer science. So let me take you through this picture. This is a very nice picture. So as I said, that Nokia Bell Labs originally started in around 1925. So this picture just shows that what Nokia not Nokia, because this is another history thing. So Bell Labs was not always part of Nokia. So it's last few years when it has Nokia brand. So Bell Lab is more like a 90 years old company, not Nokia Bell Labs. So that's the first thing. So just let's look at this timeline, that how this emerged. So 1927 में जो है there is a breakthrough, first breakthrough, and that is about electron diffraction. So it's not communication all the time. And then probably most of you will be familiar with transistor, and that was invented in Bell Labs in 1947. So, and if you know a little bit of communication, then maybe you will know this guy Claude Shannon. So he was a part of Bell Labs, and so that is kind of called that it was the start of communication, modern communication. That is what we call digital communication. So this paper is kind of landmark paper, and it came in 1940. And then you go through this and you'll see that laser was invented here, solar cell was invented here. And a big breakthrough came in 1962 when Telstar, it was the start of this live TV transmission that now you are familiar with. And even going further, you will see
probably more useful for you. Unix and C language. So that these are pretty much big inventions from Bell Labs. And then you will see fiber optics. Another big thing came in 1990s, that was DWDM. So it's a rich history of inventions. Up to now, we have about 9 Nobel Prizes coming from Bell Labs, which is equal to probably any good university in the world. So this is how Bell Lab has performed innovative research in last almost 100 years. So that is where I work. And now I'll take to the brief history of these Gs, what we call. So most of you probably you won't know what 2G was. So I guess some of us guys, we started our education and academic career with 2G was just starting in the 90s. So it was all about calls, voice. So what happens in each G of communication, that there is something new, and then we improve something on what we already had. So इस 3G में क्या होता है कि आप voice को हम improve करते हैं, and mainly we make it low cost, because 2G में आपका voice it was quite expensive, and in countries like Pakistan, that was one of the issues, that if it is not cheap, then people won't use it. So 3G में ये हुआ कि आपकी voice जो थी वो काफी cheap होगी, and then we brought broadband data. So it was start of data, but data was not really the big thing. So it was just starting in 3G. और 4G में क्या हुआ कि we almost voice is zero cost, and we tried to improve this data, and we had low cost data and data capacity. So this is improvement. And what was new? It was MTC, higher data rates. So MTC is machine type communication. So first time we went from consumers to machines. And then in 5G, we tried to improve all of these, and it was like zero cost data, MTC optimized, and we started to play a little bit with industrial IoT. So that was the big use case in 5G. So what we want to do in 6G, so I'll show that actually we already have started working on 6G. So RF sensing will be big thing, short range communication. So again, we are moving away from data now. So these things are pretty much there, zero cost data, voice, massive MTC, whatever. But the big thing is RF sensing and industrial IoT optimized for low cost. Again, here industrial IoT just emerged. Here we would like to make it low cost, and then it will work. So when technology comes, it is innovation, and this is good, but it won't work if it is not cheap. So if you see a trend in all of these Gs, what's going on here? So you have voice here, but it was expensive. Then it was cheap here. Then data was here, but it was expensive. Then it got cheap here. Here we have industrial IoT, but it is expensive. So that is one of the reasons that it's not really working that well. So our goal is to make it very cheap here, and then it will work. And then you will see wireless communication everywhere, besides what you are doing with your smartphones these days. And RF sensing has to play a big role here, and that will be a new thing. And again, we are not sure that how good it will work, because it will be a new thing. But this will be kind of a revolution, and these are the more evolutions. Okay, so let's move on. And then this is maybe interesting for you, that how we are progressing over the years. So here you will see some numbers. Where are we now? We are in 23, and that is exactly where we are. So we already have 5G launched around 2018. When I say launch, it's a release 15 in 3GPP was the first release when
We have 5, so that is called 5G release. And then we have release 16 and 17. So we are, what these releases are, so they're just trying to improve on what we already have in first release. So this is called very basic 5G kind of thing. So most of deployments are still EMBB, so which is like your data. And then we try to improve on, forget about what URLC and other things are. So let's think that we are trying to improve on. And then we enter in this 5G advanced phase. So release 18, which is 23 this year. So we will be having our first 5G advanced, which is something between 5G and 6G. And then we will try to make small changes. So when we talk about release 19, release 20, we will not make any big change. So this is how technology progresses. Once we have our basic features, then we try to improve it, but not that much. And in the background, we already are doing work on 6G. So here we start 6G work. So this is our 6G thing. And around this time, released 22 or around 29. So that will be our, here we will have our first 3GPP specs. Release 29, it's kind of sandwiched between advanced, 5G advanced and 6G. And then you will have deployments around 23. So this is how 6G will come. Okay, so what we want to have in 6G in terms of technologies, we have identified these 6 technologies. There could be more than that. और इसमें आपको सारी स्लाइड की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. You will just look that AI ML is one of those technologies that we believe that this will really revolutionize 6G. And we have other technologies, but this is not really the topic of today's talk, so I will not really go in the details. So let's just focus on this part, that AI ML for wireless communication in next G is one of the key technology. So let's focus on this part only. And where we will be using AI in wireless, we'll be using it at many places, everywhere, because wireless networks are very dynamic. So we have to provide services to different kind of situations, and we would like to optimize our networks for each and every different kind of situation. So it's not just about providing data. So that is how for most of the countries like Pakistan, it looks like आपको अगर डेटा अच्छा मिल रहा है तो then you will say यार it's fine. So अगर आप सिर्फ डेटा के टर्म्स में देखें, most probably आपको 4G और 5G में कोई फर्क नजर नहीं आएगा. So and if you see some difference, then it's not because of technology, it's because of lack of coverage. So technology is not really improving your data rates, at least for simple broadband kind of applications. It is improving, but maybe for some other applications where at least in developing countries, most of the people are not even using them. So we'll be using it in cloud, TRAN, we will be using in G-Node B, which is kind of base station, and we'll be using it in UE. So everywhere in all of these 3 components, we'll be using machine learning. So that is the goal. And when to use machine learning? So that is a kind of general question. It's not only about communication. So maybe you have seen this Gartner hype cycle. So what it says, let's just focus on this part. So it says that whenever you have a new technology, people believe that you can do anything. So basically, this is the solution of every problem. And it goes here. So this is called hype. And then after some time, because it was just a hype, then people feel that actually you can't do anything with this thing. This was just stupid technology. So that is called trough of disillusionment. And that eventually will happen with machine learning, and it already has started to happen, because
initially people just believe it. Yeah, artificial intelligence can do anything. But eventually when you will try to apply, you will see that no, it cannot solve all the problems. And sometimes you will feel, no, it cannot solve anything. But actually the reality is in between this illusion thing and disillusionment, and which is like this thing. So it means that truth is somewhere in between. And as any product developer, you need to figure out that what this is. And that is very difficult to figure out. Because if you think like this, then definitely you will fall here. And that means that you will lose a lot of resources, a lot of investment that you already have done. And no company can do that. So it's difficult to survive if you do this. So what you would exactly like to see, okay, कौन सी problems हैं जो हम इससे solve कर सकते हैं? So let's be realistic. And that is where actually engineering comes. So let's go to the next slide and see that machine learning हमें use कब करनी चाहिए. So this is something which is kind of a very simple thing, that how we normally work. So if we don't use machine learning, so हमारे पास machine learning, हमारे पास domain knowledge होता है. Domain knowledge means that you know that how this system should work. I mean, kind of system model or problem क्या है. So you know the problems and the difficulties and the constraints and all that. So you can have a model. So अगर आपके पास model है, तो then you can have a algorithm that can solve that problem. So this is how normally we do as engineers, as computer scientists. Machine learning में क्या होता है कि maybe you don't have an algorithm, you don't know how to solve the problem, लेकिन आपके पास बहुत सा data है, and then you put all that data in a black box, and based on that experiences, there will be a solution coming out of that, and you just take that solution, and you don't even know that how that solution actually came out of this data. It's just like we show a lot of examples like this cat example in artificial intelligence. You show all kind of cats, and then you can figure out all types of cats. But and this is similar kind of thing, but you don't know how this whole thing works. So there is no algorithm here. It's like a black box. And this is what we would like to do with artificial intelligence. So we want to go away from algorithms, and we would like to have artificial intelligence here. So actually I was giving a talk last year, and one of the students, they just asked me that, okay, if you're saying that we have this at the moment, and then in future we have this, so it means that because we need engineers or computer scientists to have this domain-based knowledge, and then apply that knowledge and develop algorithms. So if we just get data and apply it without any knowledge, then most probably engineers and computer scientists, they will lose their jobs. So what do you think? So let's make it a bit interactive. So that was the question. So it means, because you clearly can see that if you don't need to develop algorithm, if you don't need a domain knowledge, then obviously you will lose jobs. And nowadays with this chat GPT kind of things, people are asking these questions. So then you need to look at this right side of the picture. So this picture says, okay, that's fine. You have a lot of data, and you have a black box, which is machine learning algorithm. It could be any algorithm, right? So let's not go in the details which algorithm. But how to use this data? For this, you need acquisition of domain knowledge. So that means here you need someone who knows the system. It cannot be anyone coming and just doing this part. So as long as you don't have expertise, if you are not a communication engineer or you are not a computer scientist, you don't have knowledge, you cannot just put this data and get results. Sometimes it may work, but in most of the cases, this will not work. And I can show you some examples here.
where we show that it's not that just put something inside this box and the results will come. It doesn't work like that. Okay, the results will come, but they won't be good results. So for improving those results, you need some kind of knowledge, which actually our universities provide. So it's not totally useless. Okay, so when we need to use machine learning, so this is very important for you to know if you really want to apply machine learning to any problem, not to communication problem. When the problem we have, it's a model deficit. So model deficit means that a mathematical model is not available, which means that we don't know how to solve the problem. So हम इस केस में जो है वो hit and trial से कर रहे थे, and we don't have a really good way to solve the problem, and machine learning will be very good in that. So this is one reason that you don't know the answer. So let's use machine learning in that kind of case, because you don't know any good way of solving the problem. And then second thing is algorithm deficit. Okay, so maybe you know how to solve the problem, but the algorithm is very complex. So in that case, your problem can be solved, but you don't have enough resources to solve it. So then let's use machine learning. It will give you some solution which may not be as good as your algorithm is providing, but maybe very close, and it is at much lower complexity. So see, in this problem, basically आप लोग solution को improve नहीं कर रहे, आपकी performance algorithm deficit में improve नहीं होगी, लेकिन आपको solution जो है वो less complex मिलेगा. So this is totally different from first model deficit thing. In model deficit thing, आपके पास solution available ही नहीं था, and then you try to improve it by using machine learning. So this is very important to know. And the third thing is that actually you have the algorithm, so maybe it is algorithm deficit thing, but you know the solution somehow. But what happens with machine learning, and most of the times we ignore that, कि हमारे पास एक solution होता है, हमने उसको it's a kind of very good solution, लेकिन आप जब उसकी conditions change करते हैं, then you need to find another solution, and then maybe another solution in few minutes. It's like आप लोग अगर हाईवे पे जा रहे हैं और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप हैंडओवर्स करते हैं, आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, तो आपको डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, and maybe if you are driving fast, you have to use you have to solve many problems in very short time, and in these kind of situations, maybe it's very good to use machine learning, because it can give you one solution that may work for many cells. So this is why you should use machine learning. So this thing here is important, that so just again to re-emphasize that here your domain knowledge is very important to know that where even to apply machine learning. So don't just apply it everywhere. I'll show later on that what kind of problems could come that if you just try to apply it everywhere. Okay, so I see some raised hands, so maybe we can have a quick discussions up before going to the next slide. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि एमएल के अंदर हम हर तरीके का डेटा नहीं डाल सकते, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, इस एनएम्बिगुअस बॉक्स के अंदर रेलेवेंट डेटा ही डालना है और उसके लिए डोमेन नॉलेज होनी लाजमी है. Exactly. बट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन वो डेटा क्या होगा अगर हम लोग एमएल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रेलेवेंट डेटा सेट क्या है हमारे पास? दैट इज माय क्वेश्चन. Okay, so that's great question. So I'll answer in some of these slides. So I have picked a couple of use cases.
where I'll show that I will not really go in the details, but I'll show that what you can do, and if you don't do it in the right way, then what can happen. So I'll come back to that question, but Right, sir. with some slides, right? Okay, so if not any other questions, so let's move on. So why we will use ML in communication? Because systems are getting more complex. So it's not about your EMBB data anymore. As I said before, in 5G and 4G, you may not even see the difference in most of the applications. In some applications, you will see, but mostly you won't see. It's about different kind of applications where what we called URLLC or MTC. So I'll not go in details what they are, but these are applications where you are not concerned about the data. You are concerned कि हमें उसकी latency requirements कितनी है. So and then reliability means that there is no breakage in your connection, and you get it within this 99.999 kind of reliability. And then in MTC, it's about IoT devices where you have small data packets, but they are like maybe in millions. So for all those kind of services, and they're different services, so it means that you need different kind of solutions. And it may not be really possible to do it conventional way. So that is the reason that we are thinking about machine learning. Okay, so let's go to the answer of the question that I'm very happy that it was asked. So this is a snapshot of a paper that we wrote a couple of years ago. And this shows that how we apply machine learning to UE positioning. So UE means your smartphone. So आपके पास आगे एक स्मार्टफोन है, आपको पता है कि उसकी लोकेशन जो है नेटवर्क को पता होती है, और वो नेटवर्क को कैसे पता चलती है. So that is what we call UE positioning. So इस पेपर में हमने क्या किया कि हमने मशीन लर्निंग से UE positioning की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. So there is a conventional way of doing things. So let's focus on these figures. I will not show any results or anything. If you really want to go in the details, this paper is available online. Just read it, and then you can come back to me via email, and we can discuss what's inside. So here you have a model. On the right side, you have a model. So let me see if I can use laser pointer. Okay. So here you see this is Lincoln Park in Chicago, and we prepared a model for that. And you see in this model, you can see buildings, roads, streets. These are the base stations. So it has 8 base stations. So we prepared by using any kind of software. So let's not go in the details. और उस सॉफ्टवेयर ने हमें ये पिक्चर दी, एंड दैट सॉफ्टवेयर सेज कि ये है आपका बेस स्टेशन, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ये ब्लू रोड है, and then we collected a lot of measurements, and that is what you are saying, that what kind of data you need. So we need, so your mobile all the time it's measuring some what we call RSRP values, but maybe you can just think it's a kind of signals that you are receiving from these base stations. So आपका मोबाइल हर वक्त उसको receive कर रहा है, even if you are not calling anyone, still it is measuring that signals and it is reporting back to these base stations. तो conventionally हम जो UE tracking है वो कैसे करते हैं कि if you are at this place maybe, तो आपको एक सिग्नल इस बेस स्टेशन से मिल रहा होता है, आपको एक इस बेस स्टेशन से मिल रहा होगा, और एक मे बी फ्रॉम दिस बेस स्टेशन एंड मे बी फ्रॉम दिस बेस स्टेशन. सो अगर हमें 3 बेस स्टेशन से सिग्नल मिल रहे हो, तो देन वी कैन अप्लाई दिस ट्रायंगुलेशन मेथड. It's very simple method. Maybe I don't know if you have read in your undergrad communication, but it is. तो हम इससे कम्युनिकेशन फाइंड कर लेते हैं, सॉरी इससे पोजीशनिंग फाइंड कर लेते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें हमें ये बेस स्टेशन मे बी ऑल 3 of them are not available. So in that case what you'll do is
इस केस में आपकी जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है वो बहुत बुरी होती है। एंड देन यू हैव अदर रिक्वायरमेंट्स के तीनों के सिग्नल जो है वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए एंड मेनी अदर थिंग्स। सो लेट्स नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ दोस। सो समहाउ दिस इज हाउ कन्वेंशनली यू डू दैट। अब इस स्टडी में हमने क्या किया कि वी कलेक्टेड अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्विंग बेस स्टेशन। सो मे बी अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका सर्विंग बेस स्टेशन ये होगा एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा एंड द नेबर्स आर दिस बेस स्टेशन एंड दिस बेस स्टेशन। So then you get data out of that. So this is how we perform the study. So यहाँ से आपने raw data जो है वो collect किया। फिर आपने data collect करने के बाद then you have to do some pre-processing on that data. And here comes the step where you decide that which data is useful and which is not. Data तो आपको मिल गया, all kind of raw data. And a simple layman, what it will do, it will push all the data to this machine learning model and it will get some result from that. Of course, you will get some result. But आपको कैसे पता है कि ये result अच्छा है या नहीं अच्छा? Then, of course, you compare with some standard other things and you perform inference and all that. लेकिन इस step में आपको domain knowledge चाहिए। आपके पास data आ गया, लेकिन उस डेटा में से कौन सा यूजफुल डेटा है और कौन सा यूजफुल डेटा नहीं है, लाइक रेडियो मेजरमेंट्स इन दिस एग्जांपल। अब आपको रेडियो मेजरमेंट्स जो हैं वो मिल रही हैं फ्रॉम मे बी मेनी बेस स्टेशंस। अब इसमें से किस बेस स्टेशन की यूजफुल है और किसकी नहीं है, और इसमें से कितने नेबर्स आपने रखने हैं। क्या आपको सिर्फ एक नेबर से ही इनफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्या आपको 2 नेबर्स चाहिए, 3 चाहिए, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। सो ऑल दैट you do by experimentation. So if you go in the details of this paper, you will see कि उसमें हमने सारा दिखाया है कि कौन सी input अगर आप use करें तो क्या होता है. So all those kind of results you will see. So that is where you need domain knowledge. And even here, just for collecting data, you need domain knowledge. And here it's more like a computer science kind of stuff that you try to improve your ML model. But before coming to this point, you need a lot of expertise here. And if you do things very poorly here in this part cannot do much. Of course, you can do some smart things here, but if you do something stupid here, there is less improvement that you can get out of that. So that is one thing. Just going back to that. So I see a raised hand. So maybe we can take a question here. If not, let's go on. And this is kind of algorithm that we use. This is called feed-forward neural network, non-deep, and this is deep neural network. So we used actually this one. How many layers you need and how many neurons in each layer, that is something which computer scientists do. And of course, I mean, we have to do it as well. But I'm just saying this because आप में से बहुत से लोग computer science background के साथ भी हैं. So computer scientists are more into this part. कि कितनी आपको layers चाहिए, कितने neurons चाहिए. Of course, there is a theory behind that. आप इसको just randomly इसकी layers और number of neurons नहीं बढ़ा सकते, because you may have not resources and it takes a long time just to optimize that. So this is, but what happens before this, that is more like engineering. So it's a kind of collective effort. Okay, so that was one example. Now I'll show you another example. So this is about reinforcement learning, which is another form of machine learning. So just maybe first go to this slide. So in reinforcement learning में क्या होता है कि इसमें neural network की तरह आप एक दफा मॉडल को ट्रेन नहीं करते, maybe you need retraining again. So इसमें क्या होता है कि आप अपने एजेंट को, which is a computer machine learning model, आप डिप्लॉय करते हैं. It takes some action. So there is some effect on the environment, and then environment will give you some kind of reward. So you compute that reward, and then you decide what is the next action. So it works like this and you can have many states, and at some point you will converge, and then you know that how to proceed.
So this is more dynamic kind of thing as compared to supervised learning, where you have already collected data and then based on that you make decisions. So here you just fetch data online. And this is very important for communication, because communication में क्या हो सकता है कि आप अपना अगर आपका machine learning model live है, and then you expect maybe you experience new things. So in that case, you actually will rely on this kind of thing that learns on the fly, and then it makes some decisions. आप उसको दोबारा से machine learning model को offline लेके जाके ये नहीं कर सकते हो कि I'll get answer after 1 hour. तो उस 1 hour में आप क्या करेंगे? So this is one other important area where we are investing a lot. And this is just another example कि इसमें क्या हो सकता है, why we need machine learning and typically reinforcement learning. कि अगर आपकी UEs like your smartphones are here, then again you are getting some signals from serving cell, you are getting some signals from the neighboring cells. अब इसमें से कितनी power आपको transmission uplink transmission के लिए चाहिए? So that is some decision that we have to make. And it's a quite complex decision, क्योंकि जो पावर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, that not only depends on your serving cell कि आप इस सेल के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, it also depends कि आपके neighboring cell कहाँ पे हैं. And then just think that if you have to make one decision and you have 10 neighboring cells and you want to account for all 10 neighboring cells, then it's a very difficult problem because आपके input parameters बहुत ज़्यादा हैं. And we don't have an algorithm to solve this kind of problem. So here again, this is called algorithm deficit. We don't have algorithm. यहाँ पे आपकी mathematics workout नहीं करती. So then it means that this is a very good use case for using machine learning. And just again, I will not show the results, but this is kind of one figure that shows, okay, maybe you can have 20 base stations, और वो सब एक दूसरे पे depend करते हैं उनकी powers. And we try to figure out, and to tell you the truth, you will see that a lot of base stations are showing similar kind of optimal powers. And what we figure out that actually this is not a good result. So even our machine learning could not solve the solution for this. So again, here you need domain knowledge, because this was kind of brute force kind of thing. We just tried to solve the problem by hit and trial and just using reinforcement learning. But eventually we couldn't solve the problem because we don't have enough knowledge of the system. So this example shows that machine learning will not solve all your problems. It may solve some, it may not solve some. Okay, so again, very high level thing. So what we want in 6G. So I'm not sure how many of you know about the transmitter and the receiver things. So this is a very simple diagram showing that your transmitter has some blocks. So just here, maybe some encoding, some symbol mapping. If you don't know, don't try to even to understand. Just think that in each transmitter, we have different blocks. Similarly, in the receiver, we have different blocks. So these blocks means that they are performing different kind of functions and they are kind of serially connected. So what first thing that we would like to do with machine learning is this, that हम हर block को machine learning block से replace करना चाहेंगे. And that is what I think most of the people are doing these days. कि अगर आप ये चीज पहले machine learning के बगैर कर रहे थे तो आप machine learning से कर लें. अगर ये वाला block आप normally mathematics model से कर रहे थे तो आप machine learning से कर लें. And this is same about all models. This will give you some gain. This will improve something, but this will not be the real gain. This will not be revolution. रेवोल्यूशन ये है कि आप इनमें से कुछ ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं, एंड देन यू हैव इनपुट हियर एंड देन आउटपुट हियर, एंड देन यू सी कि इन तीनों ब्लॉक से मिलके जो एमएल मॉडल बनता है उसमें टोटल गेन कितना है आपको. बिकॉज नॉर्मली इसमें क्या हो सकता है कि आप शो करें कि यहाँ पे इस मशीन लर्निंग मॉडल ने आपको बहुत ज्यादा गेन दिखाया, लेकिन वो सारा गेन यहाँ पे मे बी वेस्ट हो जाए एंड मे बी हियर. सो एवेंचुअली सिस्टम को तो कोई गेन नहीं हुआ. अगर आप उसमें से कुछ ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हैं और देन आप बताते हैं कि नाउ आई कैन शो कि
this is much better performance. And this is what we would like to have in future. And this is not only about this particular transmitter and receiver block, but it's valid for many other things. Or eventually in 6G, this is what our futuristic wish, I would say. I don't know कि इसमें से कितना चीजें हो पाएंगी. This whole transmitter is just like one big machine learning block, and the receiver is one big machine learning block. And this is one model. Instead of having like 5 models, you just have one model. And then you see that, okay, I can solve all of these problems in one go. And that will be the real revolution. I don't know that how long it will take to reach there. So that is our wish list. I don't think that we can get all out of that, but let's see. And why we need standardization where we work around. So if you make this kind of models on the transmitter and receiver side, and then you say, okay, they should work. I just checked on my computer. They were showing me extremely good performance. So let's just deploy them. You cannot. And the reason is that up to now, we have not standardized anything for machine learning. So basically, if you do this thing, this is fine. It has no effect on your standardization. If you do something this, it may have some effect. If you do something this, then it means that something is flowing from transmitter to receiver, which is related to machine learning. But in 5G, we didn't have anything about machine learning. So it means that if you really want this thing to work, first you need to improve what is going on between transmitter and receiver. And we need many years, and many companies need to agree on something that what will be here, because ये हो सकता है कि आपका ट्रांसमीटर जो है वो एक वेंडर का हो, रिसीवर जो है किसी और वेंडर का हो, and then it means that you need some kind of common signaling here. अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते तो वो दोनों ऑपरेट कैसे करेंगे? And standardization means that they should be able to understand a common language. So we need a joint effort from many companies even to agree on something here. And that is quite big task. And that is what exactly we are doing. So we need to figure out कि data कहाँ से आएगा. जब हम machine learning as a computer scientist machine learning के बारे में बात करते हैं, we never talk about data. कि data कहाँ से आएगा? It's a huge problem to collect data. क्योंकि data बहुत ज़्यादा हो सकता है. And then we don't know कि machine learning का training और inference के लिए आपने model deploy कहाँ करना है. इसको आपके मोबाइल फोन पे डिप्लॉय करना है जिसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ट्रेन कर सके, या इसको नेटवर्क साइड पे करना है, बट देन यू कैन हैव लेटेंसी इश्यूज. और वो मॉडल एमएल मॉडल जो है अगर आप यूई साइड पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वहां पे ट्रांसफर कैसे होगा? इट कुड बी लाइक फ्यू जीबीज. और उसके बाद अगर आप रीट्रेन करना चाहते हैं तो तब आप क्या करेंगे? और आपकी परफॉर्मेंस, बिकॉज अबाउट मशीन लर्निंग वी डोंट नो दैट इट वर्क और नॉट, तो आप इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कैसे करेंगे? So there are many issues to be solved before actually we do anything like that. So this diagram shows that this is your smartphone and then this is your base station. So you need some kind of air interface that enables this use of machine learning. And at the moment, we don't have anything on this. So you cannot send anything over this interface at the moment. And that is what we need to solve before we start applying machine learning in 6G. And then there is another interface between G node B and network, I mean core network. And still again, we don't have many things besides this NWDEF that, okay, forget about it, but it is something that has been standardized for machine learning or artificial intelligence. So we need to work on this part before even we can think about solving problems with artificial intelligence. So that is one part of the story, that how you can use machine learning to solve your problems. But then there is another part, which is network as a service. Network as a service means कि ठीक है, हमने maybe हम artificial intelligence को use कर रहे हैं अपने network की performance improve करने के लिए, which eventually improves UE's performance. लेकिन आप अपने मोबाइल फोन पे
आर्टिफिशियल एनेबल्ड एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहेंगे और आप उसको कर सकते हैं, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द नेटवर्क, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आप ये यूज करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर दैट थिंग टू वर्क you need to download something on the air interface, and that can be very heavy. So it means network has to provide that model and to take care of that model over the air interface, and our networks are not again ready for that. So this is called network as a service. That network, you need network support to do anything on your side. Maybe some simple kind of AI algorithms that you can run, that is okay, but you cannot do very bulky and heavy things on your UE side if this part is not ready. So that is another thing that in standardization we are considering. So think about it like two different problems. One, we use machine learning or artificial intelligence to improve our networks, and the other thing is that we use networks to provide you a service which is AI enabled. They are two completely different things, and in both things you need to improve your air interfaces, and that is what we are trying to do. And maybe then if you have learned something about this federated learning kind of things over there, even if you want to do some kind of measure training, maybe a part of the training is on the UE side and then another part of the training is on the base station side. Again, you are communicating. So if this part is not ready, then how you will do this training? So that is why these interfaces here and also here, they are very important before we start using artificial intelligence in 16 networks, besides just training and getting some results that we are trying to do. Again, this is a very high level paper that we have on the use of machine learning or artificial intelligence in 16 networks. You can find some use cases here and what important challenges we see. And then I just have this one last slide, and then we go to the Q&A. Okay, so final word, AI as an enabler is a reality. So are close to be. So enabler means that we are trying to solve some problems by using machine learning. And it's again going back to that block by block terminology कि आप अपना block लें, उसमें normal algorithm की बजाय आप machine learning use कर लें और उसको improve कर लें. So that is something we are many companies and we are also trying to do. Then, but the issue is that real-time adaptive AI air interface is still far away. So again, our ideal wish list is a bit far. And the reason is what I already said, that there are many problems to solve, many intermediate steps that we need to solve, that I already showed here, that what kind of interfaces you need before actually you get complete gain out of your machine learning models. So we don't know that it will really revolutionize wireless systems in 60. Definitely it will revolutionize at some point, but because we need a lot of effort, a lot of considerations for applying 60 networks. So AI will be there in 60 networks in some form, but how much it will be, it's very difficult to say at this time. And with this, I think I'm done for today for the first part, and then maybe we can have it Q&A, and then I'll just show you one slide just about something which is not related to this technical discussion, and this is more about for your motivation. So let's first go into the Q&A. Thank you very much, Dr. Majid. बहुत ही आपने अच्छा लेक्चर दिया. It's our honor कि आप जैसा accomplished रिसर्चर हमारे साथ आ जाए हैं. मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है. मैं यहाँ पे एरिया में हूँ. मैं भी वायरलेस पे काम करता हूँ. मैं यहाँ ब्रॉडकॉम में एक कंपनी है जो वाईफाई चिपसेट्स बनाती है, तो मैं उस पर काम करता हूँ. थोड़ा सा मैंने पहले इंटेल में 5G पे काम किया था, तो हमारा डोमेन एक है, मतलब बट यू आर मच अकम्प्लिश्ड माशाल्लाह. तो मतलब बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मैं इस तरह देखता हूँ ना डिफरेंट वायरलेस जनरेशंस, तो हम 1G to 2G आए तो मेरा
बेसिकली बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के हम डिजिटल पे आ गए, एनालॉग से डिजिटल पे आए। 2G से 3G CDMA वाज द मतलब क्लासिफायर जिसने 3G को डिफाइन किया, फिर OFDM ने 4G को डिफाइन किया, 5G हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर वेव बीम फॉर्मिंग मतलब कह रहे, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 6G AI ML है, जो कि अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे ना, मतलब देयर वुड बी मेनी अदर फीचर जो आप दिखा रहे थे, लेकिन जो डिस्टिंग्विश फीचर है जो एक कॉमन मैन को समझ आएगा कि 5G और 6G में क्या फर्क है, वो AI और ML ही होगा। यू आर वेरी राइट। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अभी देखिए अभी 5G भी फुल रोल आउट नहीं हुआ, अभी भी हम 4G पे हमारा NSR है, तो 5G 5G में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मिलीमीटर वेव्स तो पे किस तरह काम करना है, कैसे इनको यूज करना है। तो आपका क्या ख्याल है, 6G किस टाइम फ्रेम में आप समझते हैं कि 6G कॉमन मैन को एक्सेसिबल हो जाएगा? इज दैट सम टाइमलाइन आपके जहन में है कि हम कब देख सकेंगे 6G को अपने फोन्स में, अपने अपने लैपटॉप्स में, अपने डेली यूज केसेस में? नहीं, I think that is what आप तो इस इंडस्ट्री में है, so you know that how this works. So if we look at this timeline exactly here, so we will make it in 2030. So question ये नहीं है कि 6G कब आएगा, because anyway we will bring it in 2030. As we did with this, so let's be more open. So let's not really be very conservative on things. हमने कहा कि 5G जो है, it will be about URLC, right? बिल्कुल right. But हमने जब रिलीज 15 में 2018 में 5G को लॉन्च किया तो उसमें URLC तो थी नहीं, लेकिन हमने 5G लॉन्च कर दिया. And so again, I mean, it was just the side thing कि हम timeline problem नहीं है. So this will come in around this timeline, even maybe a bit before, because in Korea में जैसे वो deployment जल्दी कर लेते हैं. Problem is कि हम इसमें से कितनी problems actually solve कर पाएंगे. जैसे मैंने कहा कि हम कहने को तो AI नेटिव इंटरफेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने फीचर्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे 6G में. एंड दैट इज एग्जैक्टली मैंने कहा कि हम कहते तो ये हैं कि हमारा फ्यूचर गोल लिया है कि AI विल बी एवरीवेयर, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं, इफ I'll be very frank, I'll say कि I don't think so कि हम 6G में अपना ट्रांसमीटर जो है उसको एक ML ब्लॉक बना सकते हैं. I don't think so personally. And this is actually most of the people know that this will not happen in 6G. हम कोशिश करेंगे कि हम जितना करीब उसके जा सकें, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, which I personally believe कि ऑलरेडी जो इस तरह के सिनेरियोज हैं, we have more chance कि हम यहाँ पे गेन्स अचीव करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कोई एल्गोरिथम तो था ही नहीं. हम लोग ह्यूरिस्टिक्सली चीजों को करते थे, पैरामीटर सेटिंग्स जो होती थी वो पहले हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती थी. मशीन लर्निंग इज अ मच बेटर ह्यूरिस्टिक प्रोवाइडर, तो उसमें हमें डेफिनेटली सबसे पहले गेन आना शुरू होंगे. लेकिन इसमें भी अब हम चाहते हैं कि पहले हमारे पास इन बेस स्टेशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए कोई इंटरफेसेस नहीं है. हमने कभी उनको मशीन लर्निंग या AI रिलेटेड कभी डेटा जो है उन्होंने आपस में शेयर नहीं किया. सो पहले एज ए स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट हमें ये करना है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट यूजिंग इंटरफेसेस, और वो कोऑर्डिनेशन करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे गेन नजर आएगा. इसी तरह हमारे और बहुत से इंटरफेसेस हैं, लेकिन probably this is easy to do as compared to something like this. अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर पे हमारे पास रीजनेबली अच्छे जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड ब्लॉक्स हैं, वो रीजनेबली दे आर गुड इनफ, और उनके पीछे अच्छी खासी थ्योरी है, लाइक इक्वलाइजेशन, चैनल एस्टिमेशन एंड थिंग. अब उसको इंप्रूव करना जो है that is not easy, and that will be actually the first step. So probably हम इस स्टेप पे हैं, and already we are working on that, कि हम हर ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर दें. लाइक यू नो कि चैनल एस्टिमेशन जो है, दिस इज वन ऑफ द बिग यूज केस वो जो कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त, एंड पोजिशनिंग इज अनदर. अब यहाँ पे हम डेफिनेटली इंप्रूव कर लेंगे एंड वी विल गेट सम गेन्स, बट वी डोंट नो कि ये वाला गेन जो है ये कब आएगा.
एंड इवन अगर हमने ये भी गेन अचीव कर लिए तो 6G तो हम लॉन्च कर ही देंगे. So that's not a question कि लॉन्च कब करेंगे. क्वेश्चन ये है कि हम उसको इम्प्रूव कितना कर पाए हैं. इसी तरह जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इट्स परफेक्टली राइट कि हमने मिलीमीटर वेव के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए. एंड एक्चुअली अगर आप देखो तो होता क्या है कि there is kind of this very well known saying कि हमेशा जो odd G होता है वो फ्लॉप होता है और even G जो है वो सक्सेसफुल होता है. तो बेसिकली मिलीमीटर वेव में जितने हमें प्रॉब्लम्स आए हैं ना ये हम सॉल्व करेंगे 6G में. बट 6G में आपको पता है कि हम टेराहर्ट्ज पे जाना चाह रहे हैं. सो टेराहर्ट्ज मे नॉट बी सक्सेस एंड मिलीमीटर वेव विल प्रोबेबली इट विल बी सक्सेस. सो उसको हम पूरी तरह समझेंगे और उसको अपने सारे से गेन ले लेंगे. बट देन वी विल बी okay, maybe doing something about terahertz. So we are trying to understand, but probably 10 year is not good enough for changing something right from the bottom to top. Right, that's right. नहीं सर, थैंक यू. और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये देखें जो माजिद है, ही इज इन बेल लैब्स, और वो देखें आप उस कंपनी का देखें कि उसकी अकम्पलिशमेंट्स देखें कि देयर आर 9 नोबेल प्राइजेस, राइट. आप सबको पता है पाकिस्तान में हमारे पास 2 हैं टोटल. एक ऑलरेडी हमने काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया है, दूसरे को भी हम कोशिश पूरी करेंगे उसको भी हम और कंट्रोवर्शियल उसमें से बना दें. टेक्नोलॉजी में एक ही है, टेक्नोलॉजी में ही है, और उसको भी हम कंट्रोवर्शियल बनाते रहते हैं. हम कहते हैं नहीं ये तो मतलब हम उसको किसी और लाइन पे ले जाते हैं. तो मतलब आप ये इमेजिन करें, इस तरह मैं अब यहाँ पर मेरी बेटी अभी जाने है उन्होंने यूनिवर्सिटी में, तो हम यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे थे. तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना तो उनके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है उन्होंने कितने नोबेल प्राइजेस विन किए हुए हैं. सो मतलब आप यहाँ से देखें, यहाँ इस माशरे में ये लेवल है कि यूनिवर्सिटीज प्राउड करती हैं कि हमारे पास नोबेल प्राइजेस हैं, 4 है, 5 हैं, अभी माशाल्लाह बेल लैब्स में 9 है. तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. और इसलिए हम आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ें और इन इंस्टीट्यूशंस में आए, यहाँ पर यूएस में आए, एडमिशंस लें, यहाँ पर पढ़ाई करें. यू विल सी अ डिफरेंस. पढ़ के वापस जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो डिफरेंस फील होगा. जिस तरह आप देखें ना, आप बेल लैब्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जिनके पास 9 नोबेल प्राइजेस हैं. ये जो शैनन का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर माजिद, शैनन मतलब ये अगर आप कम्युनिकेशंस की दुनिया के, ये न्यूटन या आइंस्टाइन है, ही इज सच अ बिग नेम, राइट. और वो बेल लैब्स में थे. तो बिल्कुल आप लोग जरूर कोशिश करें आगे आके कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें. और जिस तरह आप अपनी स्टडीज में ये आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अगर आपके हालात सही हैं, ठीक हैं, आपके फैमिली लाइफ में ऐसा है कि आप बाहर आ सकते हैं, तो जरूर यूएस आएं और यहाँ पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें. तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही आपने अच्छा लेक्चर दिया. वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने हमें इतना टाइम दिया. तो ये बाकी स्टूडेंट्स भी बिल्कुल आप पूछें, कोई क्वेश्चन है तो. So maybe I actually going from your motivation talk. So actually I just have one slide just for this motivation kind of thing. So it's not totally non-technical thing. So that was something that maybe people will enjoy more and they will contribute more. So I tried my best to keep this presentation completely non-technical, but I don't know, still maybe it's a bit hard. So let's go on something going on, actually just starting from this Rizwan's discussion. That okay, so this is just a motivation slides. I don't know if you can see it completely, but so the most motivation is that how to get there. So I'm a research professor at Trinity College in Dublin. So I have another role, and before that I was in academia. So we recruit PhD students, and I have been closely working with students. So let me show you something. And this is not mine, but it's just a fun thing which I learned from somewhere. So what is the biggest hurdle in success? So then someone said that it is lack of confidence. And that I see it's a problem with a lot of students coming from Pakistan. They're good, but they don't know that they are good. And as I told you, मुझे इसका क्यों पता है? क्योंकि मैं part of academia रहा हूँ. We receive applications. I have done hiring and all that.
Sometimes people are good, they don't know they are good. And then someone said that, okay, if this is the biggest hurdle in your success, then what is the biggest reason for failure? And then someone said that it is overconfidence. So now you see that it's quite close call. There are people who lack confidence. There are people who are overconfident. So find out the right balance. And why this is very important, because what I see from a lot of applications that I receive. So actually I see both of these, lack of confidence and overconfidence. So just let me tell you one story. So what happens that when we advertise with a PhD position, because यूरोप में ये थोड़ा डिफरेंट है. यूरोप में यूएस यूनिवर्सिटीज की तरह आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई नहीं करते. यूजुअली पीएचडी पोजीशन जो है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ज़ुबान को इसका पता होगा, वहाँ पे पीएचडी पोजीशन जॉब की तरह एडवर्टाइज होती है, एंड देन लोग उसको जॉब की तरह उस पर अप्लाई करते हैं और फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, एंड इफ दे आर सक्सेसफुल then they just get admission. So university has a minimum role. It's direct between professor and students. तो हम जब जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो बिलीव मी और नॉट, हमें 50% एप्लीकेशंस पाकिस्तान से आती हैं. कैन यू बिलीव कि चाइना भी है, इंडिया भी है, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स ह्यूज, बट वी रिसीव 50% एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तान. And out of those 50% applications, 45 applications are coming from this overconfidence. I don't want to use this, but they're rubbish applications. We are asking for someone to have background in signal processing to do this PhD, and someone from mechanical engineering and computer science who never heard anything about communication is applying for PhD in communication. And that is what exactly overconfidence is, because overconfident people think that other people are stupid. I don't think that it works like that. And sometimes those applications are copy paste of one application to 10 emails, and we can see it. That the guy is sitting in the midnight and he's just sending emails here and there. And he's a very overconfident guy. And he just thinks that it will randomly work. It will not. People are reasonably wise. They will not do that. And now I tell you very interesting fact, and this is based on my about 7-8 years of academic experience of receiving applications. Because I have friends who are professors and they keep on telling me, and sometimes it is a bit embarrassing because they say, okay, I mean, your country is sending applications like nuts, and they're all rubbish. And then out of those huge number of applications that we received from Pakistan, a very small percentage, maybe 5%, is actually coming from public universities. 95% is coming from these overconfident people. So basically all the people who are here in this block, and they're maybe good enough and studying in public universities, they're reached in public universities like UETs or NETs, after a lot of struggle, they don't have even confidence to apply. And actually they had more chance to succeed, but they didn't apply. And then we have those 95% people. I'm not saying that people in public universities, private universities are not good. I'm just saying about those guys who are maybe doing something else and applying in PhDs in something else without even looking at what expertise are required. So here we have the issue that we need to boost confidence of people here. And we need to tell people over here that, okay, you can do that, but at least spend your effort on where you have a chance. Don't waste your time and others' time, because then what will happen, after some time, लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार पाकिस्तान से सारी एप्लीकेशन इसी तरह की आती हैं, जो भी पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती है, just throw it out, because they are all nonsense.
and that is a very bad effect. Overall, not maybe on personally आपको शायद ना हो इतना problem, लेकिन आपके बाद जो लोगों ने आना था उनके लिए बहुत बड़ी आपने problem create कर दी, and this has happened. I know personally. People are saying okay यार, मतलब हम जब भी करते हैं advertisement, आदि applications पाकिस्तान से आ जाती हैं, and they are not really even readable. So please avoid this part. Just choose your goals and then put all of your energy into that instead of just sending 10 random applications every day. It will not work. Believe me, it will not work. And then if you are here, then believe in yourself that if you have reached in a good public university in Pakistan, then you're good enough. Then just try it. Just seek help from people like this forum, I guess. So seek help, learn, and try to achieve something. And just before I end, because I just had this one slide, and based on my personal experiences, I would like to share one success story of one of the students who has just completed his PhD with his Pakistani students, of course. He just completed his PhD this year, and he's joining Nokia next month, I guess. And I don't remember that any Pakistani has completed PhD with Bell Labs before. I'm saying I don't know, maybe someone could be. And let's try to talk with him. So Karam is with us. So maybe Karam, you can just introduce, and maybe if you have one slide, you can just share and just speak with the students about your experiences and from what's your background, and it's just informal talk. So from my side, thank you very much for listening. Over to Karam. Hello, everyone. Can you hear me? Yeah. Okay, cool. If you can allow me, then maybe I would like to share my screen. Yeah, sure. Because right now I'm not allowed to do that. Maybe you need to give me the host rights if possible. Yeah, admin has to do that, I guess. Okay, so at least I don't know if this is possible. So do we have an admin here? Yes, sir. Now Yes. you can share Okay. your screen. Okay, so Karam, please go ahead. Okay, thanks a lot. Can you see my screen? I think not. अभी तक तो डॉक्टर माजिद ही की नजर आ रही है. Sir, Majid, सर एक्चुअली दो स्क्रीन शेयर हो गई है तो Okay, maybe डॉक्टर माजिद आप बंद कर सकते हैं अपनी स्क्रीन yeah, I शेयरिंग. think अच्छा दो हो probably गई हैं. आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे तो उनकी आ जाएगी सबके लिए. yes, I think now it will work. Right. Okay. अभी नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? Yes. Okay, very good. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आई गेस कि आप लोग जो है ना अभी तक बड़ी लंबी टेक्निकल डिस्कशन चल रही है तो आप थक गए होंगे. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रैप अप एवरीथिंग इन 7 to 8 minutes. मेरा नाम मोहम्मद करम शहजाद है और सॉरी कैन यू हियर मी? तो मेरे ने जिंदगी के हिसाब से बहुत ही बहस की थी खान थे. Can you please mute them? yourself? I think it's okay. My name is Mohammad Karam Shehzad, and as Majid already told you, मैं अभी as a senior research specialist के तौर पे काम कर रहा हूँ Nokia Bell Labs में. मैंने अभी ही joining दी है just 1 month ago. मेरा यहाँ पे आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करें कि आप तो भी आगे जा सकते हैं एंड आप जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बट स्टिल वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करती हैं. तो यहाँ पे मैं जो है ना 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा जिससे बेसिक पर्पस ये है कि आपको मोटिवेट करूं
एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जस्ट आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने का मकसद है ताकि आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़ें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने अपनी जो एलिमेंट्री स्कूल है वो कलर कार से कंप्लीट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है। और मैंने 2000 में जो है मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट की। तो मैंने जहाँ से पढ़ा वो स्कूल जो है वहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था। मैंने जो है ना वो स्लैंग वर्ड जो यूज होता है कि टाट के स्कूल पे बैठ के पढ़ना, तो मैंने टाट के स्कूल में ही बैठ के पढ़ा है। और वहाँ पे हमारा जो है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे पास जो है ना वो बैग वगैरह भी एक ही बैग था जो कि मैंने कोई 5 से 7 साल चलाया, पर वो भी जो है ना काफी ज्यादा अक्सर जो है वो फट जाता था और उसकी मैं सिलाई करता रहता था। तो मैं अपने वालिद साहब से कहता था जब बारिश होती थी कि मुझे नया बैग ले दें, क्योंकि जब बारिश होती है तो किताबें सारी गीली हो जाती हैं। तो मुझे कहते थे कि आप जो है ना वो शार्पर इस्तेमाल कर लें, उससे जो है ना बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। खैर दिस इज जस्ट टू टेल यू कि किस तरह से मेरी लाइफ चली। एंड देन ड्यूरिंग द स्कूल मैं क्या करता था कि कुछ पैसे कमाने के लिए मैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहा था। क्लर कार में आपको अगर कोई गया है वहां पे तो उसको पता होगा, वहां पे झील वगैरह है। तो वहां पे मैं जो है वो टिन्स वगैरह कलेक्ट करता था, ये जो कोक वगैरह के टिन्स होते हैं दोस्तों के साथ, और वो जो है वो अक्सर हम बेचने चले जाया करते थे शाम को। एंड देन मैं जहाँ पे रहता था हमारे घर के पास जो है वो एक पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कूल था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना वहाँ पे पढूं, क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर देखता था बच्चों को जाते हुए, लेकिन मेरे चूंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे ऐसे कि मैं वहाँ पे पढ़ने नहीं जा सका। लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश थी। खैर मैंने ये गवर्नमेंट के पब्लिक स्कूल के अंदर से वहाँ से मैंने जो है अपनी एलिमेंट्री स्कूल जो है वो कंप्लीट किया। एंड देन आई मूव टू सिटी इन चकवाल, वहाँ से मैंने जो है वो मैट्रिक और एफएससी वगैरह की, और वहाँ से जो है मैंने लाइफ की जो है वो हार्डशिप्स के साथ डील करना जो है ना मुझे स्टार्ट हुआ। और वहाँ पे मैंने जो है वो एक सुपरमार्केट के अंदर भी काम किया ड्यूरिंग माय मैट्रिक एंड एफएससी। और आफ्टर एफएससी मुझे घर वालों की तरफ से काफी प्रेशर था कि बस अब आपने बहुत पढ़ लिया है तो अब जो है ना आप काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। एंड देन सम पीपल दे जस्ट गिव आइडियाज टू माय रिलेटिव्स कि ठीक है इसको बाहर जो ही वगैरह भेज दें कुछ पैसे लगा के ताकि वहाँ पे जाके कुछ काम वगैरह करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बट कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे जिनको मैंने जो है वो कहा कि नहीं प्लीज मेरे रिलेटिव्स को पुश करें कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। खैर टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जो है वो नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली जो इमरान खान ने बनाई है वहाँ पे मैंने जो है वो बैचलर्स में एडमिशन लिया। एंड हियर आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर इमरान खान जिन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूट कायम किया, और बिकॉज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट आई एम हियर टुडे वर्किंग एज अ सीनियर रिसर्च स्पेशलिस्ट इन नोकिया बेल लैब्स। ड्यूरिंग बैचलर्स मतलब बैचलर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ से मुझे मेरा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं वहाँ पे परस्यू कर सकूँ बैचलर्स। तो मुझे जो है वो नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वहाँ पे मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली जो मैंने अवेल की, और वहाँ से मैंने बैचलर्स किया। ड्यूरिंग द बैचलर्स जो है मैंने जब अपना बैचलर स्टार्ट किया तो आप लोग काफी हैरान होंगे ये सुन के कि मुझे पीसी जो है वो यूज करना नहीं आता था। मैं बहुत ही थोड़ा सा फेमिलियर था इसके साथ। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं ये 2012 की बात है, तो मैं उस वक्त कंप्यूटर जो मॉनिटर है उसको कीबोर्ड कहता रहता था, कीबोर्ड को माउस कहता रहता था। एंड आई रिमेम्बर कि वंस इन द वेरी बिगनिंग मुझे लैब के अंदर एक दोस्त ने कहा कि ये डाटा यूएसबी के अंदर कॉपी कर दो, तो मैं जो है ना वो डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपने दूसरे दोस्त को कहा यार इसका मसला हल करो, ये क्या कह रहा है। सो दिस इज माय स्टोरी। एंड देन मैंने यहाँ पे देखा कि आप में से काफी ज्यादा लोग जो है वो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा जो एडमिशन था बैचलर्स में वो कंप्यूटर साइंस में हुआ। और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर चूंकि हमारी क्लास में जो है वो पेस इतनी तेजी से चल रही थी कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड जो ऐसा था कि मैं कंप्यूटर के साथ ही फेमिलियर नहीं था। खैर मैंने प्रोग्रामिंग जो ये स्टोरी बताने का मकसद आपको डिमोटिवेट नहीं करना, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि
आपको challenges जो है वो accept करने चाहिए and you can get success. तो मैंने जो है वो अपने प्रोग्रामिंग के जो दोनों कोर्सेज थे मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने वो दोनों फेल कर दिए और मैं काफी ज्यादा परेशान था कि मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही। तो खैर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने जो है वो समर में एक प्रोग्रामिंग की बुक ली और लैपटॉप खरीदा मैंने बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और मैंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट की एंड देन वहां से लेकर अभी तक मैं अपनी सारी जो जॉब्स करता आया हूँ या जो मैंने आगे पीएचडी वगैरह की वो सारे का सारा काम प्रोग्रामिंग के अंदर ही था। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग से भाग नहीं सकते किसी तरह से भी एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड देन बैचलर्स के बाद मैं नस चला गया इस्लामाबाद, वहां से मैंने मास्टर्स किया एंड इवन ड्यूरिंग मास्टर्स जो है मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करना पड़ी फाइनेंशियली भी और अपार्ट फ्रॉम दैट सम पर्सनल फैमिली इश्यूज। एंड मैंने जो फर्स्ट इंटर्नशिप की वो मैंने अपनी कोई फील्ड में नहीं की, मैंने नस्ट में जो है वो एज इंटर्नी काम किया जहाँ पे मैं एडमिशंस डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प डेस्क पे था। वहाँ पे मैं जो है जो नए आने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी क्वेरीज को डील करता था। एंड देन ड्यूरिंग माय मास्टर्स I got this one of the prestigious scholarships Erasmus and then I moved to University of Malaga in Spain और वहाँ पे मैंने जो है वो मास्टर्स का थीसिस कंप्लीट किया and then over there I met a lot of people. You might have heard this term called donkey. It's a slang word. तो वहाँ पे मुझे लोग मिले और मुझे कहते हैं कि आप यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आना जो है वो इतना आसान नहीं है, तो आप जो है वो वापस ना जाएं, यहीं पे रहें, इलीगली काम करें और लाइफ में जो है आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो आप इस तरह से अपने करियर को लेके चले। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरे अल्लाह ताला ने इतना सपोर्ट किया है तो आगे भी इंशाल्लाह चीजें जो है वो स्मूथली चलेंगी। And I did not listen to those people and I would strongly advise you guys as well that don't listen to those people. And then I went back to Pakistan after completing my Erasmus and during that phase I started applying for PhD abroad. Or then I got this opportunity in Nokia Bell Labs in Paris. I would like to thank Dr. Majid. इन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था, मैंने इनको अप्रोच किया था, सो थैंक यू डॉक्टर माजिद। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री के अंदर और अभी मैंने रिसेंटली ही अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की है एंड 1 मंथ अगो मैंने जो है वो एज अ सीनियर रिसर्च स्पेशलिस्ट के तौर पे नोकिया बेल लैब्स के अंदर काम करना स्टार्ट किया। एंड दैट्स नॉट ऑल, लाइफ गोज ऑन एंड आपको बताने का बस मकसद यही था कि आपने कभी भी किसी भी फेज के अंदर अपनी लाइफ में जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना या डिसऑर्डर नहीं होना। चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में और आपको उनके साथ डील करना है। And I wish you all the very best to all of you. And if you have any question, then you are more than welcome to ask. There were many things to say, but because of the time constraint, I kept everything very short. So thank you very much again. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद करम शहजाद, आपने अपनी बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी शेयर की माशाल्लाह। इट्स ग्रेट कि आपने ये सारा कुछ, मतलब लोग नहीं बताते, जनरली पीपल जस्ट टेल देयर सक्सेसेस, लेकिन किस तरह वो फेलियर से, किस वो बैकग्राउंड से आए हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, दैट इज ऑलवेज ग्रेट, राइट। तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो प्लेस अचीव की वो अचीवमेंट नहीं है। मतलब अचीवमेंट उनकी थी कि उनके फादर तो खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से इवेंट और मास्टर्स किया। तो बेसिकली जो स्ट्रगलिंग आप फैमिली से आते हैं ना, अचीवमेंट्स उनकी होती हैं। हमें तो मतलब सब कुछ मिलता है, स्ट्रीमलाइन मिलता है, ये आपने कोर्स लेना है, यहाँ आपने जाके पढ़ना है, ये आपका कंप्यूटर है। तो सही बात है, अचीवमेंट सही आप लोगों की है जो स्ट्रगल करते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस मोटिवेटिंग स्टोरी। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के, और थैंक यू डॉक्टर माजिद, आपने इनको इंट्रोड्यूस किया हमारे स्टूडेंट से। तो हम भी थोड़ा सा, मैं आईकोड गुरु का बताऊं, हम भी ये कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते हैं एप्लीकेशन के लिए ना, तो बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनका प्रोफाइल ऐसा हो कि वो जो आप कह रहे थे बिल्कुल कि ऐसी रैंडम एप्लीकेशन ना लगे, इट शुड हैव सम मीनिंगफुल, ताकि एक तो वो स्टूडेंट की बेहतरी है और दूसरा इससे हमें पाकिस्तान का नाम बनता है। मतलब
वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है ना, पाकिस्तान से आ गया, मतलब फर्ज करें किसी तरह वो आ गया, ही मैनेज, तो वो पूरा डिपार्टमेंट नेक्स्ट टाइम ना हेजिटेट कर रहेगा पाकिस्तान से स्टूडेंट लेने में कि यार ये तो मतलब ओवरऑल अब लोगों को इतना पता नहीं है ना हमारी यूनिवर्सिटीज का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो हम वो बेरर्स हैं जिन्होंने वो बनाना होता है, अपना इम्प्रेशन बनाना होता है, और आगे हम अपना काम करते हैं, अपनी सक्सेस लेते हैं, लेकिन इससे इन द एंड पाकिस्तान को भी हेल्प होती है। तो बिल्कुल डॉक्टर माजिद, हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि वो जो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनका प्रोफाइल इस तरह का हो, वो कॉरेस्पॉन्डिंग अच्छी पोजीशंस रेस्पेक्टिव जो जहाँ पे वो कंसिडर होंगे, और जहाँ पे उनका प्रोफाइल मैच करेगा, और उनके प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम बिल्कुल यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो यूएस में आए हैं, मतलब हर साल वी आर गेटिंग 8 to 10 स्टूडेंट्स माशाल्लाह, इस साल भी आएंगे। दे गेट फुली फंडेड पोजीशंस, और वो यहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी के लिए आते हैं। तो बस वही है कि अगर आप गाइड करें और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझाएं कि यार ये है, इस तरह आपने अप्लाई करना है, देन इट वर्क्स आउट। लेकिन वो आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्लाइड, वो जो आपने कॉन्फिडेंस का बताया ना, इट्स रियली वेरी, बहुत ही पर्टिनेंट है कि what is the recipe for failure and what's the recipe or what's the reason of success. So it's confidence, it's a thin line between which you can cross, और आप एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो yeah, thank you very much both of you यार, आपने Yeah, बहुत so just before we end, just for our students, because I have worked with Karam. So now I moved to US, but before I was in France. So हमने जब इसको लिया था, so इस स्टोरी को देखने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि I was hiring, तो मैंने देखा यार एक पाकिस्तान से बंदा आ रहा है, so उसको हायर कर लेते हैं, and I hired. This does not go like that. मैंने he just sent me, I don't know him before he joined us. He just applied for PhD. उससे पहले हम about 7 to 8 months से PhD student ढूंढ रहे थे, and that is all over the world. That's not really from Pakistan. And we had a team of people who actually do recruitment. And then I just told him, okay, yaar, I have received a CV from Pakistan, and you know, Pakistan से जब CV आता है तो लोग पहले ही skeptical होते हैं, यार पाकिस्तान से बंदा MS करके आ रहा है तो क्या होगा? But I told them, let's try. So let's interview him, and I will not speak in the interview much. Maybe I'll just ask a couple of questions, but before I'm from Pakistan, so I don't really want to interfere. And before that, हमने 8 महीने already PhD student जो है ढूंढ रहे थे. And then we interviewed him. I didn't know about anything about his background. So उसकी जो recruitment थी उसमें उसकी story, we didn't even think about this story. We didn't know that. So it's a absolutely merit-based recruitment. And even if I wanted, I couldn't do that because उसमें एक पूरी team होती है, and he actually, I think, went through probably 3 interviews and presentation, and our boss actually is in US. So it's a long process in Bell Labs. It's not simple. And he went through all that, and in his recruitment, nobody even thought about his personal circumstances. So he just got it on merit. And I remember, just to interrupt, Majid, I'm sorry. मैं यहाँ पे mention करना चाहता हूँ कि this is the first platform मैंने जहाँ पे अपनी जो है ना वो story share की है, and I don't know कि and Karam, actually thank you very much, because I requested you. I knew it, and I requested yes you that please do it. I know that you won't do it. And if you remember this, Karam, I remember actually this thing. So after he was offered this position, so he said something like, because I am the lone earner of the family, because it was so innocent kind of question, because he didn't know anything about abroad and PhD thing. So he just asked, okay, so I'm the lone earner of my family, so would I get enough to support my family a little bit, because my circumstance. So then I told him, okay, just stop here. So you don't need to request anything. You have got this position on your merit. And then I told him on a separate email or call, I don't remember. And then I told him, okay, don't make your circumstances excuse for anything. You got this on merit. So you will get enough. I can offline, I can guarantee that you get offline, you can support your family, everything. It's a good enough money and all that, because it was well supported position.
but don't use the, because that is another thing that from my experience I have learned. Actually, this is a bit unfortunate. Sometimes we get students who actually tell us that we have very poor, bad circumstances, so please give us this position. Believe me, no one will give you. So never talk about your personal circumstances with the hiring committee or anyone. They are not interested. Yeah, so I'm just mentioning this thing in front of Karam because probably he will remember this. We had this discussion, and I just told him, okay, don't try to ask them that how much you will get because you don't have you have bad circumstances. You just got it on merit. Don't talk about circumstances with the hiring committee. So just believe in yourself. You already have got it. And that is what I was saying. Okay, come from lack of confidence to confidence stage. I think probably now Karam is in that stage. Yeah, so thank you very much from my side. I think you guys gave us very good opportunity to provide our views on technical as well as non-technical things. नहीं सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, दोनों का। आप लोगों ने अपना अबाउट 2 आवर्स नाउ इतना आप लोगों ने टाइम दिया और इतना अच्छा लेक्चर दिया, इतनी मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को। बड़ा सही आपने डायरेक्शन में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, तो थैंक यू वेरी मच सर। So back to sir, moderator. before ending, can I have ask question, please? Sure. Sir, it's from the slides of Sir Majid. Yeah, maybe you can ask question and then we can discuss. It's fine. Sir, it was about the AI roadmap. Sir, उसके अंदर ML के blocks बने हुए थे और receiver वाले end के ऊपर आपने ये कहा था कि हर ब्लॉक को हम लोग ML के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सर, मेरा क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि अगर हम लोग डिकोडिंग की बात करते हैं तो सर वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं या फिर एल्गोरिदम्स हैं जो कि इनकोडर में यूज हुए थे, उसी को देखते हुए हम लोग डिकोडर का एल्गोरिदम बना रहे होते हैं। आई गेस यही फिनोमेना हो सकता है। तो सर एक जब स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बना हुआ है जो कि फास्ट चल रहा है, तो हम लोग उसको ML के ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं? और उसके लिए ML के ऊपर अगर हमने चलो कुछ डेटा सेट से मूव कर भी दिया तो सर वो इनएफिशिएंट होगा ना, क्योंकि एक एल्गोरिदम हमने खुद बनाया है, फास्टेस्ट एल्गोरिदम बनाया और फिर हम लोग एक एल्गोरिदम कंप्यूटर से निकलवाना चाह रहे हैं। No, okay. So first thing is that so now go back to what I said about this algorithm deficit thing. So if we already have a very good algorithm that is working and we mathematically know that this is the best we can get, then you're absolutely right. Then why should we use machine learning? And that is exactly, this is our job to figure it out, that where to use it and where not to use it. So what this block kind of thing जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, ये मैंने बताया था कि कंसेप्चुअली ये हम करना चाहते हैं, बट देन वी हैव टू फिगर आउट अबाउट ईच ब्लॉक के इसमें से कौन सा हमें जरूरत भी है करने की और कौन सी जरूरत नहीं है। At many places actually you are right, we will figure out कि यार इसकी जरूरत नहीं है, it's already this is the best we can have, and इसमें reasonable complexity, हमें complexity का भी कोई issue नहीं है। जो third thing थी adaptability और scalability, वो भी ठीक है। Then why to use that machine learning? So that exactly we are trying to promote. अगर आप आजकल के technical conferences में जाएं तो people are trying to solve everything with the hammer of artificial intelligence. Because this is it's easy to get your papers accepted. But then at some point, people will start rejecting your papers and they will say, okay, why are you doing this? Because hame already jo algorithm hai, this is working nice. So that block thing was a wish list that we will definitely try, we will make our analysis. And then we have to find the right problems where AI can do something. If AI is not improving anything, then why to do that? Yes, sir, that answers my question. Thank you. I have one more question. Along with the membership of this iCode group, I am also a member of IEEE Vehicular Society. And according to this magazine, IEEE Vehicular Technology, they sent me. Sir, इसके अंदर एक phrase लिखा हुआ है कि हम लोग
कि 6G will enable us the transition from connected things to connected intelligence. तो सर कनेक्टेड इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं, मेरे जहन में तो सिर्फ टाइनी एमएल आता है कि वो एमएल जो है वो कनेक्टेड है डिवाइस के अंदर। तो सर हम लोग ट्रांजिशनिंग कैसे कर रहे हैं कनेक्टेड थिंग्स मींस आईओटी से कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अंदर इन डोमेन ऑफ 6G? नहीं, इस पे थोड़ा डीप हो जाएगा, बट आई थिंक नाउ इन 6G वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिजिटल ट्विन्स काइंड ऑफ थिंग्स. So like or maybe for this biological world. So ये virtual reality जो आपकी आ रही है. So basically over there we will get a lot of benefit out of AI. क्योंकि वहां पे we are not talking about just doing something fast which is like connected. So अगर हमारी coverage good enough है तो हम already we are in a connected world reasonably. So probably now we are moving from data towards doing some actions like robotics, for example, or doing this virtual reality. So here intelligence is connected. Maybe one intelligent system is connected with another intelligent system, or maybe we are trying to improve this digital twins, for example, or metaverse, for example. So these are the examples of intelligence connected, what you are saying. So that is a complete different world. I mean, of course, these kind of things have their own risks, like you have seen what happened with Facebook, with Meta. सर अगर मैं एग्जांपल इसकी लेना चाहूँ तो क्या ये हो सकता है कि चैट जीपीटी प्लस अगर हम लोग बार्ड एआई को एक साथ कनेक्ट कर दें तो क्या वो इस डोमेन के अंदर आएगी? नहीं, चैट जीपीटी देखें वो आपकी सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना. वी आर सेइंग कि मे बी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, मे बी यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड नाउ वी आर ऑलरेडी टॉकिंग ओवर दिस टूल, but maybe kind of experience where you feel that you are actually in US, and that's like a digital experience. Maybe you are sitting in a room, so instead of you feeling me, you see me on a screen. It's a kind of 3D experience, and it looks like that we are sitting across the table. And of course I will not be there, but maybe my digital twin is there. So those kind of services, of course, they require communication. So it will be very difficult to do it without communication support. All right, sir. Thank you. These were my questions. Thank you so much, Sir Majid, for your valuable time and sharing this very valuable knowledge with us. And thank you so much, Sir Karam, for sharing your story. Mashallah, you're definitely an inspiration for us. Thank you so much, Sir Rizwan, for joining us and sharing your thoughts. अगर किसी का कोई further question नहीं है, then we can definitely conclude this session here. Again, Sir Majid, I would like to thank you. ये बड़ा ज़बरदस्त webinar था, and मैं खुद भी telecom domain से हूँ, तो it was really informative. So thank you so much, sir. Welcome. Please feel free to contact me on email if you have any questions. I'm open to any discussion. Thank you. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you so much. I guess कोई किसी का further question नहीं है, then we can conclude the session here. काफी time हो गया, I guess वहाँ पर भी I guess late हो रहा होगा, तो जी sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Okay, ji. Thank you everyone. Thank you, Sir Majid. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.